हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो जो इग्नू के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री के, MHI 04 का जो यूनिट 6 है, चैप्टर का नाम है अर्ली मेडिवल पॉलिटीज इन पेनिनसुलर इंडिया 6 to 8th सेंचुरी AD। तो बेसिकली जिस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है वो है पॉलिटिकल प्रोसेसेस बिटवीन 6 to 8 centuries AD। मतलब आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द पॉलिटिकल प्रोसेसेस बिटवीन 6 to 8 centuries AD। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया है। द प्रोमिनेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन द डेक्कन डेवलप मोनार्की एज द चीफ कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। This policy of the major dynasties was influenced by the Gupta polity of northern India and the Gupta contemporary in the Deccan and Andhra region. The northern Brahmanical Sastric text and institution had a deep influence on the emerging kingdoms of peninsular India. The Chalukyas and the Rashtrakoot that emerged in the Deccan were the kind of polities based on the Brahmanical socio-political order. Samanta type of predatory states consisted of the ranking among the chiefship and power structure usually inclined to the one endowed with military capability. The rulers used to adopt high-sounding titles, and in the same fashion, their officers were nominated, who usually came from either the royal family as the lesser chief or feudatories of the Vishya, Rashtra, and Des, head by Vishyapati. Des Adhikari were functioned as the system of polity at the local level, and the Mahajans were looking after the villages. These states were the loosely knit chiefship placed under a more powerful dynastic control based on a monarchy legitimized by the Brahmanical order and institution. The two major states of peninsular India, the Pallavas and the Pandyas, are said to be products of the Brahmanical socio-political ideology, which consider with the trend of political development in the whole of the subcontinent in the Gupta and post-Gupta period. The early Pallavas are said to have made their presence felt in the southern parts of Andhra Pradesh, and they were pastoral chiefs. Under the Pallavas, a new system of polity emerged in which power was shared between the king and the chiefs. Brahmadaya and temples extended the boundaries of the state and created a new relationship between the owner of the land and the class of cultivators. The two remarkable institutions like Brahmadaya and temples played a lead role in mobilizing and redistributing the available resources. The temple, based on the Puranic ideology, functioned as the legitimating device and became the hub of all economic activities. The Pandya kingdom was similar to Pallavas in every respect. The major difference lay in their origin only. The Pallavas were native ruling families, whereas the development of Pandya polity was influenced by the northern Sanskrit Puranic tradition. The Pandyas claimed their origin from Shiv and the lunar lineage. They were also successful in establishing such a political organization in which Brahmadaya and temples function as integrative institution and restructured economy, society, and polity of the state. Thus, Pandyas and Pallavas were the sides of the same coin. So students, ये था आज का वीडियो। यहाँ पे मैंने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से जिस पे कि नोट्स आ सकते हैं उस पर आप लोगों को मैंने जो है यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।
साथ ही साथ स्टूडेंट्स जिन बच्चों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए या प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और अगर किसी भी बच्चों को किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए, चाहे वो आपका MHI 01 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, जितने भी जिनके पास जो ऑप्शंस है या किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। मैं आपको उस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।